if somebody is trying to do 12th organic chemistry without, some basic concepts of chemistry and hydrocarbons, it will be very difficult for them. But I had to do that. पहले 1-2 महीने I did not understand even a single bit of it, and I had to juggle between physical chemistry and organic chemistry, and I did not, I was not able to get a hang of it. But then I realized that I have to do this. I focused a lot on organic chemistry, and उस वजह से right now organic chemistry is my strongest subject. It is my favorite subject and my strongest subject. And how I did that is that I started with one shots. एंड उससे मैंने सारी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही बार में 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर कुरा के खत्म करे, एंड मैंने उसके नोट्स बना लिए, एंड मैंने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए. दैट वाज द फर्स्ट राउंड. तो फर्स्ट राउंड में मैंने क्या किया, आई did the one shots. I did all the 4 chapters from one shot in 4 days. Then I started with the NCERT. मैंने चारों चैप्टर की NCERT बहुत अच्छे से रीड करी, and I understood everything from the NCERT that I could. I highlighted the important points, and then after this was done, I started with the NCERT back exercises. So once I got a hang of organic chemistry now, I went ahead and made short notes of all the 4 chapters of organic chemistry, and मैंने सारे जितने भी important reactions हैं वो सारे इन short notes में लिख लिए. एक पेज पे मेरे मतलब आगे पीछे 1 पेज में 1 chapter, and that's how I made short notes. And what I did was, जैसे जैसे मेरे आकाश के एग्जाम्स होते थे, मेरे स्कूल के एग्जाम्स होते थे, कोई यूनिट टेस्ट हो रहा है, कोई हाफ ईयरलीज हैं, प्री बोर्ड्स हैं, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ एग्जाम आई यूज टू स्टडी द NCERT ones, and I used to keep adding things to these notes. तो at the end of it ना, I think कोई भी ऐसी चीज नहीं है NCERT की जो इन नोट्स में नहीं है. That's how detailed these notes are. I have added every single thing that could be asked in the paper into these notes, and by the end of it ना, जो भी NCERT questions मेरे को important लगते थे, कोई conversions जिसमें मैंने गलती करी, कोई ऐसी conversions जो मेरे को tricky लगी and अलग लगी, जो मैंने NCERT में नहीं पढ़ी या मेरी notes में नहीं पढ़ी, that also I used to add into these. तो इसमें I have the all 4 chapters and some extra notes कि what all else there was in the NCERT or in the back exercises or anything. So because of it, by the end of it, I literally did not need to read the NCERT even a single time because I had these notes. So these notes were very helpful, and my advice to you guys would be definitely go ahead and make such short notes, because every day whenever you are free you can revise them. It's not like I revise them every day, but whenever I got the chance I use these notes. They were a great help, and I will definitely, if I can, I will put a PDF of these in the bio, and you can definitely check that out. अच्छा guys, तो physical chemistry भी you have to do exactly like physics, but the only difference is कि physical chemistry में NCERT is important because कुछ theoretical concepts होते हैं जो आपको NCERT से ही समझ आएंगे. I did physical chemistry through my notes जो मैंने कोचिंग में बनाए थे. I did modules भी. Starting में I tried to do modules, but by the end of the syllabus I did not do modules. I focused mainly on NCERT. Starting के 3-4 chapters के लिए I did the module, and that was a big help. मेरी एडवाइस होगी मॉड्यूल कर लो इस साल, बिकॉज इस साल नीट का पेपर बहुत मुश्किल आया था. चाहे वो नीट के आप एस्पायरेंट हो, चाहे आप जेई के हो, पेपर्स हैव स्टार्टेड कमिंग वेरी डिफिकल्ट. तो मॉड्यूल भी कर लो साथ साथ. आई डिड नॉट डू मॉड्यूल, बट यू आई शुड. एंड द मेन डिफरेंसेज बिटवीन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन NCERT फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. NCERT क्वेश्चंस तो पक्का ही पक्का करने हैं इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, एंड बीच की थ्योरी भी पढ़नी है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. कमिंग टू व्हाट इज लेफ्ट, yes, DNF block and जो दूसरा coordination compounds वाला chapter है. Okay, NCERT, the only god for you during your 12th class is NCERT. NCERT बहुत अच्छे से करो guys. DNF में भी and coordination compounds में भी अपनी coaching के notes जरूर बनाओ, because they will be helpful to you guys. ताकि जो tables हैं different how to write the electronic configurations, आपको DNF block की सारी electronic configuration लिखनी आनी चाहिए. I used to have a hack for it. I'm going to share that hack for you in my upcoming videos. And उसमें मैं क्या करती थी कि मैं पूरी एक लाइन में सारे एलिमेंट्स लिख लेती थी, एंड एक लाइन में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेती थी. एंड आई यूज्ड टू हैव acronyms or whatever for the exceptions, like say good luck and whatever, different acronyms that you can learn. And electronic configurations are a must for NEET.